Good morning, children. Welcome to e-learning class. Your third chapter is going on, that is subtraction. Today we will start new topic, that is checking subtraction by addition. अब हमने क्या सीखा अभी तक? सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, विदाउट बोरोइंग, विद बोरोइंग, ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग. नाउ वी हैव टू check the subtraction that we have subtracted the questions correct or not. So how we will check the subtraction? We will check it by addition. So children, let's see the procedure. How we do this question. See here, we can check subtraction by addition. For this we need to add the difference to the subtrahend. क्या होता है कि जब हम सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंस, मतलब जो हमारा जो आंसर आता है डिफरेंस, और सब्ट्राहैंड, ये जो सेकेंड वाला जो नंबर है, दैट इज डिफरेंस एंड सब्ट्राहैंड, एंड क्या करना है इन दोनों को, वी हैव टू ऐड दिस बोथ डिफरेंस एंड सब्ट्राहैंड. नाउ आफ्टर एडिंग द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विल बी द सेम एज माइन्यूएंड. जब हम इन दोनों को डिफरेंस को पहले लिखेंगे यहाँ पर दूसरी जगह पर, एंड देन सब्ट्राहैंड को लिखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे. जब दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए, विद सेम एज माइन्यूएंड, मीन्स जो ऊपर वाला नंबर है ये एडिशन के बाद आना चाहिए. तो दिस मीन्स दैट व्हाट वी हैव डन आवर सब्ट्रैक्शन, इट इज़ करेक्ट और नॉट. सो यू कैन सी हियर एग्जाम्पल इज गिवन. Minuend is 90321, subtrahend is 13245, and the answer is, after subtracting, the answer is 67077. Now add the difference in subtrahend. Difference is 77076, 77076. Subtrahend is 13245, 13245. Now what we have to do, we have to add it. So after adding, let's see what it's come. 6 plus 5 is 11, 1 carry, 7 plus 4 is 11 and 1 carry is 12, 2, 1 carry, 1 plus 2 is 3, 7 plus 3 is 10, 1 carry, 7 plus 1 is 8 and 1 carry 9. So 90321 is the answer, and this is equal to minuend. You can see 90321 and 90321. तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज थर्ड सी. एक्सरसाइज थर्ड सी इज सब्ट्रैक्ट एंड चेक द सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट और नॉट. सो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा वैसे ही सेम एज वी हैव टू डू हियर ऑल्सो. फर्स्ट क्वेश्चन इज 513264 माइनस 217654. तो फर्स्ट वी विल माइनस इट and then we will, what we will do to check, we will add difference and subtrahend, and the answer will be minuend. तो हमें let's see subtracted. 4 minus 4 is 0, 6 minus 5 is 1, 2 and 6. 2 will borrow 1 from 3. 12 minus 6 is 12, 6. This will become 12 and this will become 2. Now 2 minus 7 cannot be done, it will borrow from 1, it will become 12. So 12 minus 7 is 5. Again 1 is now 0, it will borrow 1 from 5, it will become 10. 10 minus 1 is 9. 4 minus 2 is 2. This is 4 now. So 4 minus 2 is 2. So what we will do, we will write the difference first here. 295610, 295610, then subtrahend 1217654. Then we will add it. 0 plus 4 4, 1 plus 5 6, 6 plus 6 12, 1 carry, 5 plus 7 12 and 1 carry 13. 1 carry we will write here. 9 plus 1 10 and 11. 1 carry again. 2 plus 2 4 and 1 carry is 5. So you can see 513264 is coming after adding, and 513264 is the minuend also. So this means our subtraction which we have done is correct. Question number 2.
4 minus 0 4, 5 minus 0 5, 3 minus 7 can't be done, so it will take 1 from 2 and 13 will be done. 13 minus 7 is 6, 2 1 हो जाएगा and 1 will take borrow from 1 also, so it will become 11. 11 minus 8 is 3. now यहाँ पर 1 से 0 हो गया. now 0 will borrow, it will become 10. 10 minus 9 is 1, it will become 6, so 6 will be the answer. now again we will add 613 654 987 00. so 4 plus 0 4, 5 plus 0 5, 6 plus 7 13, 1 carry, 3 plus 8 11 and 1 12, 9 plus 1 10 and 11, again 6 plus 1 7, 7 1 2 3 5 4, 7 1 2 3 5 4. now question number 3, 6 minus 9 cannot be done, so 16 minus 9, 6 will borrow 1 from 4, 16 minus 9 is 7, 4 will become 3 and 3 minus 0 is 3, 5 minus 0 is 5, 0 minus 7 can't be done, so it will borrow 1 and 10 minus 7 is 3, 9 will become 8 now, 8 minus 1 7 and 1 minus 1 is 0. now again 7 3 5 3 7 we will write here, then subtrahend 1 1 7 0 0 9. now add the difference and subtrahend 7 plus 9 16, 1 carry, 3 plus 1 4, 5, 3 plus 7 10, 7 8 and 9 and 1, so 190546, 190546 is the answer. question number 4 now. 7 minus 5 is 2, 7 minus 0 is 7, 7 minus 0 is 7, 10 minus 4 is 6, sorry 0 will borrow 1, then it will become 10, 10 minus 4 is 6, from where it has borrowed, from here, तो इस 0 ने पहले इससे लिया होगा then इसको दिया होगा, तो जब इसने इसको 1 दे दिया तो it has become 9 now. 9 minus 3 is 6 and 6 minus 2 is 4. now again add it, 4 6 6 7 7 2 and 2 3 4 0 0 5, so 2 plus 5 7, 7, again 7 0 7, 6 4 10, 1 carry, 6 3 9 and 1 10, again 1 carry, 4 plus 2 6 and 1 7, so 7 0 0 7 7 7. you can see here also 7 0 0 7 7 7. सो चिल्ड्रन आपको समझ आया कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन के बाद अपने सब्ट्रैक्शन को चेक कर सकते हैं कि दैट वी हैव डन आवर क्वेश्चन, इट इज़ करेक्ट और नॉट. ओके, नाउ आफ्टर दिस you will do question number 5 and 6 in your homework. okay children, question number 5 after question number 4, question number 5 and 6 is your homework. okay, then I will send the pic of your homework also. You check it that you have done it correctly or not. Thank you and have a nice day.